Just a minute. Okay, we will proceed to the next part now. So we have done with the yesterday. I have told you about the vector addresses. So vector addresses means what? So whenever you go from whenever you have an interrupt or exception coming when you are in the user mode, and in that case, your processor should know that in which address I have to go, because in that address some instructions are written which will perform the task. Okay, कि अगर ये इंटरप्ट आने के बाद क्या क्या करना है, क्या प्रोसेसर को क्या करना है, क्या जो कुछ करना है, that is mentioned in the instruction, and these instructions are present in that respective vector addresses. So you should know by heart these vector addresses. So that thing we have studied. Even I have told you about the different in the program status register we have lower 5 bits which will indicate कि हम कौन से mode में है. Okay, so that thing also you should know. So we can proceed further now to understand the remaining part. So I was talking about this yes, this thing I have explained you. This is the one, the vector addresses, that whenever you have, yes, whenever you have this particular reset, you go to this vector address. Whenever you have this, you go to this vector address. Okay, so it's better to understand that there is a difference of 4 and then it goes in this manner. Okay, I think this is a detailed one, because you know, reset 0, undefined instruction 04, software interrupt 08, prefetch abort 0C, data abort it is 10, reserved. Okay, so this was not there, but you can remember this. Why you have to remember this? Because there is a difference of 4 bytes. Okay, तो हमने ये देखा नहीं था रिजर्व का, हम डायरेक्टली 10 से 18 गए थे. ओके, तो इसमें मैंने बताया था कि 8 बाइट का डिफरेंस है. ओके, but to understand that everywhere you will see the difference of 4 bytes. That's why if you include this reserved one, then you will have 14, then you have IRQ as 18, and then for FIQ you have 1C. Okay, you can take a screenshot of this so that it will be well understood. ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि in this way you will be able to keep in your mind. Okay, so you should know the sequence of this, and once you know the sequence of this, then you will be able to understand this vector address. Okay, and please also remember the shorthand, that is a short form. Okay, short form. So this was all about what we have done in the last lecture. Now I think we can proceed to the next part. Yes.
Now I want everyone to write down the heading in your register, ARM instruction set. Now I have explained you about the ARM. I have given you the introduction of ARM. I have explained you the data flow model. I have given you the different operating modes. What are these operating modes? What are the exceptions? Total number of registers. Then we have seen the vector table. We have seen the CPSR. So we have done with all the introduction part of ARM. We have done with all the introduction part of ARM. Yes, nevertheless, we have also studied the three-stage pipeline. Okay, the concept of three-stage pipeline. So what I meant to say that all the brief introduction part of ARM we have completed till now. Okay, now with this basic introduction part, we can proceed further to understand the instruction sets. To understand the instruction sets of ARM. Okay, so so what I mean to say that here in your syllabus you have instruction set, along with that you have addressing modes. तो हम addressing modes पहले नहीं लेंगे, हम instruction sets लेंगे और बाद में हम addressing modes we will understand. Okay, so we will start with the instruction set, and you know the instruction set, if I have to explain you, it's better I start with load and store architecture. It's better I start with load and store architecture. So I want everyone to pay attention. I'm going to explain you I'm going to explain you the important part now, that is load and store architecture. This is one of the important feature of ARM. और आप अगर मुझे पूछोगे कि सर ये load and store architecture concept किससे आया है, so this has come from RISC. This has come from RISC. So I can comment that the most important feature of RISC architecture is load and store architecture. The most important feature of RISC architecture is load and store architecture. Okay, and you know that ARM is RISC plus CISC. This already I have explained. So as far as RISC की जब बात आती है, I think I have told you this part also, that in this RISC we have to understand load and store architecture. Okay, so today we'll be starting about what do you mean by load and store architecture, and we will be seeing some instructions, not some instruction, all the instructions associated with load and store. All the instructions associated with the load and store. Okay, so the important feature of your ARM instruction set, or the best feature of your RISC, is load and store architecture. So we are going to see what is that. Okay, so as far as your ARM instruction sets are concerned, the features are: number one, load and store architecture. Second feature is free address data processing instruction. Now this is very important. This is very important. I will give an example. As far as 8051 is concerned, suppose if I want to add two numbers, simply you write down ADD A, B. एक नंबर B रजिस्टर में रहेगा. This is the instruction I am talking about 8051. Okay, अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है तो सबसे पहले काम करना है कि एक नंबर B रजिस्टर में डालना है और दूसरा जो नंबर है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, और जब मैं उसको ऐड करूंगा the result is available in accumulator. As simple as it is. As simple as it is. Now this particular instruction, or as far as 8051 is concerned, it is a two operand instruction. It is a two operand instruction. What do you mean by two operand? One operand is B and the second operand is A. Only two operands. But as far as ARM instruction is concerned, we can have three operands. We can have three operands. So that is the beauty of ARM instruction set. That is the beauty of ARM instruction set. हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तब हम देखेंगे कि हम एक ही इंस्ट्रक्शन में तीन ऑपरेंड लिख सकते हैं. हम एक ही इंस्ट्रक्शन में तीन ऑपरेंड लिख सकते हैं. Okay, that is the meaning. That is the meaning. Okay, so this understanding we will see when we talk about the examples of ARM instruction set. Okay, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि we have a three address data processing instructions. Three address means we are using three operands. We are using three operands. That is the name. Okay. Then
we have a conditional execution. We have a conditional execution. Okay, now this is very important. Pay attention. Conditional execution. अगर कंडीशन फुलफिल होती है तभी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो. अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो दैट इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. That is the meaning of this. Okay, so we have seen in 8051, as far as 8051 is concerned, we have seen some instruction like jump instruction. Some instruction are conditional jump and some are unconditional jump. So you concentrate on conditional jump. अगर condition satisfy होती है तभी jump करना है. For example, if I am writing down JNZ, ये instruction 8051 का है. JNZ क्या करता है? Jump if non-zero. Jump if non-zero. Now this is a conditional jump. अगर non-zero है तभी मुझे jump करना है. अगर non-zero है तभी मुझे jump करना है. Okay? अगर non-zero नहीं है तो मैं jump नहीं करूंगा, उसके next वाला instruction execute करूंगा. That is the meaning. Okay? This is an example I am talking about 8051. But as far as ARM instruction is concerned, we have conditional execution. But this conditional execution is mentioned in the instruction itself. Now please try to understand this. This is very important. Conditional execution. Okay? अब ये देखो JNZ है, ये separate instruction है. अगर jump if non-zero, okay, jump if non-zero, for example मैं अगर instruction लिख रहा हूँ ऐसा, JNZ R0, comma, I will write down here as next. Now this is an instruction. This is for 8051. Jump if non-zero. जब तक R0 non-zero नहीं है तब तक मुझे ये लेबल पे जंप करना है नेक्स्ट. तो आपके इंस्ट्रक्शन में कहीं तो भी एक लेबल रहेगा नेक्स्ट. तो जब तक ये 0 नहीं होता है मुझे ये इंस्ट्रक्शन पे जंप करना है. ये इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है. तो दिस इज अबाउट योर 8051. दिस इज अबाउट योर 8051. ओके, लेकिन आर्म में क्या होता है? इन आर्म, in the instruction itself you can have conditional code. In the instruction itself you will have a conditional code. Okay, so हम जब example देखेंगे that time it will be more clear. So here I just want to understand, make you clear that जैसे 8051 में हमको conditional instruction अलग से लिखना पड़ता था, यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. इंस्ट्रक्शन के साथ ही हम conditional code लिख सकते हैं. We can execute along with the instruction itself. Okay, with the instruction itself. So how is that? We will see, or we will see what are the different conditional executions. तो हम ये पॉइंट जो है ये हम आगे देखेंगे. ओके, then load and store multiple registers. तो हम जब ये load and store देखेंगे that time I will explain you about the multiple registers. Shift and ALU operation in a single clock cycle. This is also you are familiar, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑपरेंड बैरल शिफ्टर से जा रहा है ALU की तरफ. एक ऑपरेंड is going towards the ALU through the shift register, or sorry, barrel shifter. So I can have shifting operation. I can have shifting operation as well as ALU operation in a single clock. That is more important, in a single clock. Okay, because the core is designed in such a manner that one operand you can pre-process before giving that operand to the ALU. Pre-processing can be done before you perform ALU operation. So one operand you can do pre-processing, and the other operand directly can be given to the ALU. So that is the meaning of this. I am giving you these are the features. Right? These are the important features of your ARM instructions. Okay. So that I was talking about the conditional execution. I was talking about the conditional execution. So here it will be clear. See, the conditional execution, each data processing instruction. हम जब data processing instruction देखेंगे, so in that data processing instruction, I can have prefix by conditional code. मैंने आपको बोला था, हम instruction के साथ ही
कंडीशनल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन या कोड लिख सकते हैं. सो इट इज प्रीफिक्स्ड बाय कंडीशनल कोड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज दिस इज इंस्ट्रक्शन, इसके साथ आप कंडीशनल कोड लगा दो. इसके साथ आप कंडीशनल कोड लगा दो, यानी ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. सो डोंट यू थिंक दिस इज अवेलेबल इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. दिस इज अवेलेबल इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. एक ही इंस्ट्रक्शन में मैं दोनों भी लिख रहा हूँ, कंडीशन कोड भी लिख रहा हूँ कि ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसके आगे वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो. ये सब एक ही इंस्ट्रक्शन में मैं लिख रहा हूँ. दैट इज आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्म. This is the beauty of ARM. Okay, so what is the result of this prefixed by condition code? This is a prefix ना. Instruction के पहले मैं prefix कर रहा हूँ. क्या prefix कर रहा हूँ? Conditional code. तो इसकी beauty क्या है? इसका what is the result of this? Smooth flow of instruction through pipeline. There is a smooth flow of instruction through pipeline. That means this instruction as well as condition will be performed in a single cycle. You can say in a single cycle. यही मुझे अगर 8051 में करना था तो कोड अलग से कोड के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन था और इसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन था. तो ये इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन और इसके लिए ये. लेकिन यही चीज अगर ये दोनों इंस्ट्रक्शन अगर मैं एक ही इसमें लिख रहा हूँ आर्म में, देन इट इज कॉल्ड एज स्मूथ फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू पाइपलाइन. यानी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है. ये भी मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ और ये सेटिस्फाई अगर हो गया तो उसके बाद का इंस्ट्रक्शन भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. अदरवाइज अगर 8051 में मुझे करना पड़ता था तो आई वुड रिक्वायर 2 इंस्ट्रक्शन. ये मैंने अभी आपको बताया. यहाँ पे ये वाला, ये एक इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन और ये एक इंस्ट्रक्शन. तो 2 इंस्ट्रक्शन मुझे लिखने पड़ते थे 8051 में. लेकिन ये केस से नहीं है वैसा. आर्म में ऐसा नहीं है. ओके, सो वी विल प्रोसीड फर्दर. सो वी विल सी व्हाट आर दिस कंडीशन कोड्स. So there are total 16 condition codes. Total there are 16 condition codes. Okay, which are they? The condition codes are EQ. ये EQ जो है ना, ये प्रीफिक्स है. ये प्रीफिक्स है. NE, CS, CC, MI, PL, VS, VC, HI, LS, GE, LD, GT, LE, AL, NV. Total how many? Total 16 condition codes. Total 16 condition codes. Okay. तो अगर इंस्ट्रक्शन के पहले अगर मैंने EQ लिखा, इसका मतलब अगर इक्वल है तो नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो. अगर प्रीफिक्स मैंने NE लिखा तो इसका मतलब अगर नॉट इक्वल है तो उसके आगे वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो. वैसे ही CS अनसाइंड हायर और से, TC अनसाइंड लोअर, MI अगर निगेटिव है तो एग्जीक्यूट करो. अगर पॉजिटिव या 0 है तो एग्जीक्यूट करो. अगर ओवरफ्लो है तो एग्जीक्यूट करो. अगर नो ओवरफ्लो है तो एग्जीक्यूट करो. एंड सो फोर्थ. See, these won't be asked in detail, but you should know. You should know what is EQ stands for equal. What is AL? AL stands for always. What is NV? NV stands for special purpose. Okay. So here we are not going to see each and everything in detail, but some of this you should know and which are familiar to you. Which are the familiar ones? Which are the familiar ones? This is a condition code. जैसे jump if not non-zero. Jump if non-zero. Jump if non-zero. Okay. Yeah. Jump if equal. So jump if equal means this. Jump if not equal. So you should know at least equal, not equal, negative, positive or 0. Now this is jump if overflow. Agar you know the size of a register is 32 bit and the result is also 32 bit. But if your result goes more than 32 bit, then there is an overflow. And when you have an overflow, agar overflow hai, then execute the next instruction. तो व्हाट आई मीन टू से दैट ये जो आपको दिख रहा है ना, EQ, NE, CS, CC, MI, PL, VS, VC,
HILSGEGT and GTLEALNV. So these are all prefixed conditional codes. They are prefixed conditional code. Okay, prefix conditional code. तो हम एक ही इंस्ट्रक्शन में प्रीफिक्स करो और कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो. So I will give an example for this. Okay, so here you have to just understand that there are total 16 condition codes. There are total 16 condition codes. Okay, and you should know this by heart. You never know what type of question can be asked, but detailed understanding is not required, but at least some of them you can understand. Okay, shall we proceed further? Is it clear to everyone till now? Is it clear to everyone? Yes, sir. 1 minute. अच्छा, आप लिख रहे हो? Yes, sir. Okay. If you want, you can write down, or otherwise you can take a screenshot of this. Otherwise, I have already shared this PPT, I think, with your class. Okay, it depends upon you. आपको अगर लिखना है तो लिखो. It's better if you write down. It's better if you write down. See, I should have asked you to write down this because but I need to complete the syllabus. That's why it's not possible for me to dictate and for you to write it down, because it will take much of the time और explanation फिर रह जाता है. So done. Okay. Yes, all of you pay attention now. All of you pay attention. Let me tell you before I start with this. Yes. Now the ARM instruction set are categorized into different categories. Okay, they are categorized into different categories. The categories are: number 1, data processing instructions; number 2, data transfer instructions. Now see, you have to correlate this thing with 8051. जब मैंने 8051 में भी इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाए थे तो उसमें भी हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाए. Why we are making categories? So that for proper understanding of instruction. एक ग्रुप में अगर हम इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये इंस्ट्रक्शंस ये ग्रुप में है एंड दे आर डूइंग सम सिमिलर ऑपरेशंस. ओके, जैसे अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमने रखे तो उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रख सकते हैं. So similarly, as far as ARM is concerned, your ARM instruction, all the ARM instruction sets can be categorized either in data processing instructions, or it can be data transfer instruction, or it can be block transfer instruction, or it can be a branching instruction, or multiply instruction, or software interrupt instruction. So total we have 6. So total we have 6. So under the data processing instruction, we will be seeing all the instructions associated with data processing. Under the data transfer instructions, we will see all the instructions which will come under data transfer. Similarly for block transfer, similarly for branching instruction, similarly for multiply instruction, and similarly for software interrupt instruction. Okay, so we need to understand, we need to see all these instructions under these different categories. Okay, so this slide gives you a a vision, or it will give you in a glance that these are the 6 categories. Under these 6 categories, we have to understand different instruction sets. Okay, now we can proceed further to understand. Yes, I was talking about this. So just now I have explained you the condition codes. So you are now, see here, under the data processing instruction, this is the first category.
but I have to make you understand that how these ARM instructions are different, how these ARM instructions are so important, or why these instructions are so helpful for the user. Okay, I'm trying to explain that concept. So for that, I am explaining you this particular slide in which you are saying what, that this category under the data processing category or under the data processing instruction, this is the first category. If you remember in the data instruction, ARM instruction set, this is the first category, data processing. Now, if I'm taking this first category, and in this first category instruction set, if you have an instruction in which you have conditional code plus data processing instructions, again I'm saying, आपको पता है condition code के बारे में, this is a prefix, this is a prefix. So if I'm using the prefix conditional code plus if I'm using the data processing instruction, मैं data processing instruction के बारे में बोल रहा हूँ ना, so conditional code plus if I'm using data processing instruction plus if I'm using the concept of parallel shifter, ये अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ या फिर मैं ये तीनों एट अ टाइम यूज करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? आई एम गेटिंग अ पावरफुल टूल्स फॉर इफिशिएंट कोडेड प्रोग्राम. अगर ये तीनों चीजें एक ही इंस्ट्रक्शन में हो रही है, देन इट बिकम्स अ पावरफुल टूल. और ये हम 8051 में हमको ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 8051 में पहली बात तो पैरेलल शिफ्टर नहीं है. 8051 में पहले तो पैरेलल शिफ्टर नहीं है. ओके, तो ये हम उसको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा. ओके, so and even we do not have this concept of conditional codes. Which conditional code? Prefixed. That is very important. Prefix condition code. तो आम इंस्ट्रक्शन में अगर मैं बात कर रहा हूँ डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो अगर मेरे पास कंडीशनल कोड है, ये टूल है मेरे पास, इसके अलावा अगर मेरे पास डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है और इसके अलावा अगर मेरे पास पैरेलल शिफ्टर है, तो अगर ये तीनों चीजें मैं एट अ टाइम यूज करूंगा एक ही इंस्ट्रक्शन में, तो आई वुड हैव पावरफुल टूल्स फॉर एफिशिएंट कोडेड. आई विल हैव अ पावरफुल इंस्ट्रक्शन so that everything can be executed in a single cycle. Everything can be executed in a single cycle. Otherwise, अगर ये सब चीजें मेरे पास नहीं होती और अगर मैं 8051 सपोज यूज कर रहा हूँ, तो आई वुड रिक्वायर 2 to 3 इंस्ट्रक्शन. ये सब करने के लिए 3 इंस्ट्रक्शन लगते थे, लेकिन अभी यही 3 इंस्ट्रक्शन एक ही इंस्ट्रक्शन में हो रहा है आर्म में. सो 3 इंस्ट्रक्शंस इफ आई एम यूजिंग 8051, और यही 3 इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय सिंगल इंस्ट्रक्शन if I'm using ARM. If I'm using ARM set. Okay, so I will give you best example now. I will give an example for this. Which example? The example in which you will be able to see prefix in conditional code plus data processing instruction plus parallel shifter. देखो अब तक तो हमने इंस्ट्रक्शंस अब तक पढ़े नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको बताने का कि हाउ पावरफुल टूल इज अवेलेबल इन आर्म. ओके, और बाद में हम इंस्ट्रक्शंस देखेंगे. नाउ दिस इज एन एग्जांपल. नाउ दिस इज एन एग्जांपल इन विच तीनों चीजें ऐड हो रही है. ओके, वी विल सी नाउ. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. अब यहाँ पे क्या लिखा है? इफ अगर Z1 है, अगर Z1 है तो, अगर Z1 है तो, if you see carefully, if Z is equals to 1, then perform this operation. Then perform this operation. So how many registers you are using here? You are using R1, you are using R2, you are using R3. I want everyone to have a keen observation on this. ओके, हमने अब तक इंस्ट्रक्शंस पढ़े नहीं है, लेकिन हम समझ रहे, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इंस्ट्रक्शन आर्म में कैसे लिखे जाते हैं. और आपको पता है कि इट इज अ 3 एड्रेस या फिर 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन. कैन यू सी 3 ऑपरेंड 1, 2 and 3. आई एम यूजिंग 3 रजिस्टर इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन नाउ, विच मैंने आपको 8051 के साथ एग्जांपल दिया था, ऐड A, B. वहां पे सिर्फ 2 ऑपरेंड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम 3 करेंगे. कौन से है? R1, R2 and R3. ओके, अभी ये ऑपरेशन क्या कर रहा है? ये ऑपरेशन क्या कर रहा है? प्लीज पे अटेंशन. ये ऑपरेशन क्या कर रहा है? पहले R3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ,
R3 asterisk is nothing but multiply, so R3 will be multiplied by 4. ये होने के बाद ये जो रिजल्ट है that is getting added with R2, और जो कुछ रिजल्ट है R2 plus R3 into 4 करने के बाद that result is stored in R1. So what I'm trying to explain you is that in this R1 is equals to R2 plus R3 into R4, I'm using 3 registers R1, R2, R3. सबसे पहले ऑपरेशन होने वाला है कि R3 is getting multiplied by 4. जो कुछ रिजल्ट आएगा that will be added with R2, and that final result will be stored in R1. ये लेकिन सब कब करना है? जब मेरा Z is equals to 1 है. अभी देखो ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, और ये अगर मैं 8051 यूज करके करूंगा तो you can just imagine how many instructions you would require. Now this is a problem statement. Or this is an aim given to us, and if I have to perform using 8051, you can just imagine how many instructions I would require. But if I have to do this in operation in ARM, then see what is going to happen. I would require only one instruction. And this is the instruction. Okay. Now see here, I will explain you this instruction properly. So this is a single instruction. Okay. So this is the beauty of using ARM. Okay. Now I want everyone to pay attention now. What is happening here now? Please pay attention. This is important. I am explaining you. Can you see a prefix EQ? So this is condition code. And what is EQ stands for? If equal. मैंने बताया था आपको total 16 condition codes are there, and this is the first one. If equal. EQ stands for if equal to 1. So EQ, that is nothing but if Z is equals to 1. Okay. So I have used this EQ as a prefix. ये prefix मैंने कहाँ पे लगाया? मैंने लगाया ADD पे, मैंने लगाया ADDS पे. Now यहाँ पे और एक बात समझ लो. Okay. Now this is a right opportunity to understand each and every concept of instruction. Okay. Actually आपका instruction है ADD, क्योंकि मुझे ऐड करना है. Okay. ये जो दिख रहा है ना आपको R1 is equals to R2 plus R3 into 4, तो एक्चुअली मुझे ऐड करना है, लेकिन मैंने यूज किया है ADDS. अभी एक बात, प्लीज पे अटेंशन नाउ. दिस S is appended to ADD. Now there is a purpose of using S. Now there is an option, you can append S, या फिर आपको नीचे तो आप append मत करो. Now let me tell you what is the significance of appending S. अगर मैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ अगर S लगाता हूं या फिर append करता हूं, okay, then the result is reflected in the conditional code flag. आपने अभी पढ़ा था CPSR, आपने पढ़ा है. CPSR बोलो या फिर PSR बोलो, प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, आपने देखे थे कि हायर जो 4 बिट्स है, ओके, हायर 4 बिट्स कौन कौन से? दैट इज दिस इज N, दिस इज Z, दिस इज C एंड दिस इज V. दीज आर व्हाट कंडीशनल कोड फ्लैग्स जो अभी हमने रिसेंटली पढ़े हैं. सो N इज नॉन जीरो, सॉरी नेगेटिव, Z इज 0, C फॉर कैरी एंड V फॉर ओवरफ्लो. तो कोई भी रिजल्ट अगर मुझे रिफ्लेक्ट करना है फ्लैग्स में, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर. फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो दिस विल बी 1. अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो दिस विल बी 1. अगर फाइनल रिजल्ट 0 आ रहा है तो दिस विल बी 1. अगर फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो दिस विल बी 1. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. तो अगर मैं कौन सा भी इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ और उसके साथ मैंने अगर S को अपेंड किया है, S को अपेंड करना का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शन में अगर वो इंस्ट्रक्शन के कारण अगर कुछ भी अगर मुझे
ये 4 बिट्स पे अगर रिफ्लेक्ट करना है तो दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इफ आई यूज एस। अगर मैं एस अपेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं एस नहीं लगा रहा हूँ, तो वो इंस्ट्रक्शन के कारण अगर कुछ चेंजेस हो रहा है ये 4 बिट्स पे कंडीशन कोड पे, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन के कारण आपके कंडीशन कोड फ्लैग में कौन से कोड फ्लैग एन जेड सी और वी, इस पे वो रिफ्लेक्ट करे, तो आपको इंस्ट्रक्शन के साथ एस लगाना पड़ेगा। सो एस इंडिकेट्स that whatever that instruction will give you an output, that will be reflected in the condition code flags, that will be reflected in the condition code flag. And if you do not append s, it will not show the the result will not be reflected in the condition code flag. Okay, now there is a two different thing, result आना और result के कारण ये condition code में reflect करना. So these are the two different things. Okay, आपको तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर उसको रिफ्लेक्ट भी करना है आपको कंडीशन कोड में, तो आपको एस लगाना पड़ेगा, दैट इज मीन। और अगर आप एस नहीं लगाते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कंडीशन कोड फ्लैग में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। शैल आई प्रोसीड फर्दर, या फिर आपको चाहिए कि शैल आई एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट वंस अगेन, और इज इट फाइन फॉर यू ऑल? yes or no? Sir, understood. Okay, that is great then. So this is the meaning of S. तो मैं आपको यही बता रहा था यहाँ पे कि हम डायरेक्ट सिर्फ एडीडी यूज कर सकते थे। एडीडी से अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये जो दिख रहा है ना आपको, इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, और रिजल्ट कहाँ मिलेगा? R1 में। R1 में मुझे रिजल्ट इसका आ जाएगा, तो मैं रिजल्ट दे सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट के साथ मेरे कंडीशन कोड फ्लैग्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एन जेड सी वी में। तो मैंने एस को अपेंड किया, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शन। अगर आपको लगता है कि रिफ्लेक्ट करे तो एस को अपेंड करो। ओके, सो दिस इज मोर क्लियर। आपको EQ का मतलब पता चला, आपको ADDS का मतलब पता चला। अब ये देखो ऑपरेंड कैसे लिखे, R1, R2, R3, LSL#2, LSL#2। Now let me explain you this concept now. अभी ADDS आपने किया, आपको पता है उसका मतलब क्या है। ओके, अब इसका मतलब क्या है? You have to start from back. LSL stands for logical shift left. LSL stands for logical shift left. By how many bits? By 2 bits. By how many bits? By 2 bits. लेकिन कौन से रजिस्टर पे? R3 रजिस्टर पे। तो सपोज R3 में जो कुछ कंटेंट है, उसको मुझे लॉजिकली लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 2 बिट्स। प्लीज सी, आई वांट यू टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे यू जस्ट स्टॉप मी, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर अभी समझा तो बाकी की चीजें आगे की समझेगी, नहीं तो नहीं समझेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? LSL। ना दिस ऑपरेशन इज हैपनिंग, जो होगा ना वो पीछे से होगा। तो पहले क्या होगा? LSL#2, लेकिन किस पे? R3 पे। तो सपोज मेरे R3 में जो कुछ कंटेंट है, आपको पता है हर रजिस्टर का साइज 32 बिट का है, तो मेरा R3 भी 32 बिट का है। तो मेरे जो R3 में जो भी कुछ कंटेंट है, उसको मुझे लॉजिकली शिफ्ट लेफ्ट करना है। कितने बिट से? 2 बिट से, 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना। अगर आप शाम के टाइम पे घर पे बैठ के आराम से ये करो, R3 में आप यू टेक एनी 32 bit in the form of ones and zeros, and you shift those bits towards left by 2 bits, and if you will find हम जब 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो जो आपको फाइनल रजिस्टर में जो वैल्यू मिलती है, that is nothing but it is equivalent to multiplying that R3 by 4. Now this is not something magic I'm telling you. Okay, this is not something which I am telling you all of a sudden, but if you can try this, okay, what I have said that R3 का जो कंटेंट है 32 बिट का, उसको आप लेफ्ट शिफ्ट करो 2 बार by 2 bits, और जो फाइनल आपको जो आंसर आता है
that will be equivalent to R3 का जो कंटेंट है उसको मल्टीप्लाई किया मैंने अगर 4 times, that is the same. They are one and the same. Okay, so ये जो आपको दिख रहा है R3, LSL #2, ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है R3 into 4. तो कैन यू सी हियर R3 into 4 हो रहा है? तो पहला ये हो गया, ये ऑपरेशन हो गया, R3 into 4 हो गया. तो R3 into 4 अगर मुझे करना है तो मुझे R3 रजिस्टर को लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 2 bits, विच इज नथिंग बट R3/4. तो ये पहला वाला हो गया, ओके. तो ये करने के लिए मैंने क्या किया, R3, LSL #2. ये अभी ये आया मेरे पास. ये आने के बाद R2. तो इसका मतलब ये जो अभी आंसर आया है, that has to be added with R2. That will be added with R2. तो ये इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? R3 को 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करो और जो आंसर आता है उसको R2 के साथ ऐड करो. वो ये इसका मतलब हो गया, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, एडिशन भी हो गया. और ये जब एडिशन मैं करूंगा उसका रिजल्ट R1 में स्टोर होना चाहिए. ओके, तो उसके लिए सिर्फ मुझे R1 लिखना पड़ेगा. तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन हो गया, तो क्या इंस्ट्रक्शन है? EQ ADDS R1, R2, R3, LSL #2. ये सिंगल इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? ये सिंगल इंस्ट्रक्शन ये सब चीजें कर रहा है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, EQ का मतलब होता है इफ Z = 1, अगर Z = 1 है तो क्या परफॉर्म करो? R1 = R2 + R3 into 4. ओके, तो इफ Z = 1 के लिए मैंने लिखा EQ, और ये ऑपरेशन के लिए मैंने क्या लिखा? ADDS. इसी में मैंने आपको S का भी सिग्निफिकेंस समझाया है, तो ये जो ऑपरेशन होगा इसका रिजल्ट आपकी कंडीशन कोड फ्लैग में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपके CPSR में. रिमेंबर दिस. अगर S नहीं लिखा होगा तो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ओके, ओके, सो ADDS R1, R2, R3, LSL #2. So this whole instruction, single instruction, will perform this. So don't you think that I will just stop this. Now see, ये सब important concept है, that's why I'm taking much of the time. मैं directly बता के आगे जा सकता था, no, but you should know this. Why this arm is so important? So can I comment now? That you are using a conditional code in a single instruction? You are also using the data processing instruction in a single instruction, as well as you are using the parallel shifter operation in a single instruction. All these three you are using in a single instruction, so that you will have a powerful tool. Now my question is, anyone can answer. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसमें you tell me condition code क्या यूज किया? Any one of you? EQ. Yes. Any one of you can tell me वो इंस्ट्रक्शन में डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन कौन सा मैंने यूज किया? डेटा प्रोसेस, हाँ, इट इज ऐड. ओके, और आप चाहते तो एस करो, एस का अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है. तो यू कैन से ऐड और यू कैन से एस. और वही इंस्ट्रक्शन में मैंने पैरेलल शिफ्टर को कैसे यूज किया? एनी वन ऑफ यू? LSL LSL. Very good. It is LSL #3. Okay. Now my next question is, which operand is passed through the parallel shifter? R3. Very good.
It is R3. R3 is passed through the parallel shifter. From the parallel shifter, it is given to the ALU. Okay. My next question is, what operation is happening in ALU? Addition operation. Addition operation. Yes, addition operation. That is R2 plus R3 into 4. R3 into 4 is happening in parallel shifter. Addition with R2 is happening in ALU, and the result which we get is stored in R1. Do you agree with this? Do you agree with Yes, this? sir. Yes. So that is how you in the data processing we can have a powerful tool. A single instruction can be used to perform these many operations, which was not possible in 8051. To perform the same operation, I would require more than 2 or 3 instructions. It is very clear. It is very clear. Okay. तो आपको एक घर पे ये भी देखना है कि LSL अगर मैं #2 कर रहा हूँ यानी 2 बार शिफ्ट कर रहा हूँ, that should be equal to the R3 into 4, because you should be also satisfied with this answer. Okay. लेफ्ट 2 बार शिफ्ट करो या फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही. Okay. So that was important. I hope you have understood this, because this is very important. ये आपको समझ गया तो बाकी के आगे की चीज सब समझ में आएगी. सर अगर LSL #3 होता तो? हाँ चलेगा ना. आप LSL #3 लो. That is good question. अगर मैं LSL #3 करता हूँ, मुझे एक बात पता चलिए कि LSL #2 करता हूँ तो nothing but it is equivalent to multiply by 4. Now you can give me the answer. If I am doing left shift, logical left shift by 3 bits, what does it mean? It is multiply by how much? You can tell me this. अभी मत बताओ, but you can do as homework. Yes, it is 6. It is 6 multiply by 6. It is multiply by 6. Okay. तो LSL करो, ये जो भी हम कर रहे हैं हम बैलेंस शिफ्टर के थ्रू कर रहे हैं, because you have seen in the ARM core that we have this parallel shifter as a one block before I give the operand to the ALU. So you can do pre-processing on the register. Okay. So LSL #2 करो, LSL #3 करो, आपको जो करना है करो, but you should know that is nothing but multiply by 4. Here it is multiply by 6. Is it clear? Yes, sir. Okay. Okay. So this was the thing. Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो. Sir, if we want that multiplication by 5, so what should we write in that hashtag? No. That is also a good question. Let me answer that. When I'm talking about parallel shifter, you only can perform left shift, right shift and rotate. Okay. अगर मैं लिख रहा हूँ LSL #1, LSL #2, LSL #3, then you should find out the equivalent of this. Multiply by how much? For this, multiply by how much? And for this, multiply by how much? Now this is for our calculation. लेकिन हम जो प्रोसेसर को बता रहे हैं, हम प्रोसेसर को थोड़ी बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स करो या मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स करो. This is for our understanding and for our calculation. Okay. So if it is multiply by 4, then you know that it is LSL by #2. If it is multiply by 6, you know that it is LSL #3. Okay. #3. अभी मैंने जो आपको लिख के दिया था, मैंने क्या लिख के दिया था? Let me tell you that thing. हाँ, मैंने आपको लिख के दिया था कि I want to perform this operation. I have to perform this operation. Now purposely I am taking here 4. Purposely I will take 6. Purposely I will take 8. I will not take such a number which will not have its equivalent to this, because this is the instruction which I am passing to the processor. ये तो मुझे परफॉर्म करना है, ये तो मुझे परफॉर्म करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या लिखने वाला हूँ इसकी इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन तो मैं ये लिखूंगा ना. तो आई हैव एन ऑप्शन ऑफ LSL #1, LSL #2, LSL #3. So these options only are available with me. So depending upon that, you will have multiplication with that number, because this is for our understanding, and actually equivalent of this equation, this instruction
we are giving to the processor this instruction. We are giving to the processor this instruction. So in the irrespective of that, you should know that LSL hash 2 is nothing but multiply by what. Okay, and accordingly you will take the multiplication number in that way. In that way. Okay, is it clear to everyone now? So you have to take irrespective of this, multiply by how much, for this multiply by how much, and for this also multiply by how much. We do not have any other options other than this. We do not have any of the options because parallel shifter में से मुझे यही perform करना है. It can be logical shift left, it can be logical shift right, or it can be rotate. Parallel shifter में वही होता है काम. लेकिन हमने देखा है कि लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट करूंगा तो इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाय 4. अगर बैलेंस शिफ्ट में 3 बिट से मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय 6 and so forth. So you do not have any other options if I have to multiply by any odd number. Is it clear? Yes, sir. Okay. So in the next lecture, I'll be talking about data transfer instruction because as already I have told you that I will be starting with load and store instruction. Okay, so data transfer instruction जो है वो मैं पहले start करूंगा. Okay, ये data transfer instructions आपको कहाँ है, आपने कहाँ देखे थे, यहाँ पे देखा था. Yeah, here data transfer instruction. अभी मैंने आपको डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में आई हैव गिवन यू ओनली 10 to 15% ऑफ नॉलेज. हम एक्चुअली देखने वाले इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस है. ओके, बट आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बिकॉज इन दिस यू हैव इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट इज रिलेटेड विद लोड एंड स्टोर. लोड एंड स्टोर ये सबसे इंपॉर्टेंट है. टू एक्सप्लेन यू अबाउट द लोड एंड स्टोर आई विल बी स्टार्टिंग विद डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. I'll be starting with data transfer instruction. So when this is clear, then we will go back to the data processing instruction, and afterwards we will see one by one. Okay. How much time is left? I think time is over. 1 minute रुको. Okay. So in the next lecture, data transfer instruction important feature हमको जो देखना है वो है load and store instruction. और हमारे पास load and store instruction ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So under the load and store instruction, we have to understand these 10 instructions. We have to understand these 10 instructions. Okay, LDR, STR. So जहाँ पे आपको L दिख रहा है ना, that is equivalent to load. और जहाँ पे आपको S दिख रहा है, that is nothing but store. तो लोड क्या होता है, स्टोर क्या होता है, कहाँ पे लोड कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, लोड स्टोर आर्किटेक्चर क्या चीज होती है, लोड के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है, लोड के लिए कितने इंस्ट्रक्शंस है 5, स्टोर के लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस है, स्टोर के लिए इंस्ट्रक्शंस है 5. ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले. ओके, एनी क्वेश्चंस यू हैव नाउ? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट यू हैव? नो सर. नो सर. ओके, अटेंडेंस हो गया क्या? प्लीज चेक. हो गया ना? हाँ सर, हो गए. Okay, सर आप फ्राइडे को एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाले थे ना? क्या बोले? फ्राइडे को. सर आप फ्राइडे को एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाले थे. हाँ, फ्राइडे को कब लूँ मुझे बताओ. सर हम 2:20 को फ्री हो जाते हैं. अच्छा, 2:20 को फ्री हो जाते हो ना? हाँ सर. अच्छा ठीक है. योगेश एक काम करना, कल मुझे दोपहर को एक फोन करके रिमाइंड करना. हाँ सर ठीक है. सर ठीक है ना? वो कब तक होगा एक्स्ट्रा लेक्चर, क्योंकि वो अनुराधा मैम को भी लेना है. मैम मेरे बाद लेने वाली है. हाँ हाँ, तो फिर मैम को बोलो कि मैं देखो 1 घंटा ठीक है मेरे लिए, नो प्रॉब्लम. मैम को बता देना सर 1 घंटा ही लेने वाले लोग. हाँ सर ठीक है. ठीक है. ओके ओके, देन टेक केयर, सी यू देन, बाय बाय. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय.